Hello everyone and welcome back to the channel. Hope you guys are doing great. In my today's video, I'm going to discuss about the quarterly business update about jewelry businesses. So we're going to discuss about Kalyan Jewellers, Titan, Senko Gold, PNG Gill, all the updates from all these businesses. So again, a reminder, this video will be in two parts. The first part will be in English and the second part will be in Hindi. Again, सबके लिए एक reminder है, जैसे मैंने पहले आपको पहले बताया था कि मैं rather than दो separate वीडियो बनाने के बदले एक ही वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी में सारे अपडेट्स दूंगा. So let's get started. I'll share my screen and we'll go through these updates and I'll tell you the important things that we need to remember and we need to keep you know keep an eye. So if you look at it, as I said, right, I update put the title, right, quarterly update episode 4 for jewelry business. So the businesses that we're going to discuss are about Kalyan Jewellers, Titan, Senko Gold, and PN Gadgil. So we'll start with Kalyan Jewellers, right? So Kalyan Jewellers, the revenue was up by almost 38% YOY. The same store sales growth was around, sorry, was around 28% YOY. And if you look at the international business, right, that also grew quite well at around 35% YOY. And they have this Candier business, which is mostly online business, and they're trying to now open shops for that, where it is, for day-to-day jewelry and everything. That also did quite well. And it, the sales were up around 112%. And in terms of the number of stores which has opened, right, the Kalyan store that they opened was around 12 and 5 Candier stores that they open. And if you look at the revenue, right, in terms of 38%, it's actually quite good. If you look from the market, from a general perspective, right? But if you would have noticed the day when the result came, right? I mean, I'm making this video after a couple of days, but the day when the result came, the market reacted badly to this. You might be wondering, Masood, why did it happen, right? The sales numbers were so good. The revenue went up by almost 38%. Same store sales growth was around 28%. Then why did market reacted in a wrong way? So one thing we need to understand, right? So in the market, whenever we review any results of a company, especially in a sector, right, we need to see how well they are doing compared to their peers. So here, if you look at Kalyan Jewellers, their competition, if you look in terms of the biggest competition, it is Titan, because Titan is the biggest jewelry business in India. And if you look at the Titan growth, right, the Titan jewelry business grew by almost 39%. Okay, and market liked the result of Titan much more than the results of Kalyan. We need to understand Titan is a much, much bigger business. They have almost close to 3,680 stores. Even after being, having such a huge base and everything, they grew much faster in Q1 compared to Kalyan. And the market did not like that. Market punished Kalyan on that day. And if you would have noticed the Titan, even though the Titan P is so high, the what do you call the market rewarded Titan. So in short, right, sometime in market we need to remember it does not matter about the P. It all it's matters about the growth, right? Even though PE of Titan is much higher than the PE of Kalyan, right? The market still rewarded Titan. Why? Because that is the one growing at the fastest rate when you look at the competition. And if you look at Titan, right, overall, if you see, their majority of the revenue comes from their jewelry business, even though they have watches, eye care, and other emerging businesses. So if you look at the jewelry business, it overall grew by almost 39%. And if you look at the division, right, especially the stud part, which is with carat lane, right, which includes diamond as well as gold together, right, it grew by almost 42%. And the other normal gold jewelry grew around 39%. So over here, we clearly look over that demand is there. And especially on the, how to say, on the light jewelry business, light jewelry stuffs where it is much more cheap, how to say, less expensive to buy. And if you notice, we could see for here also, for Kalyan also, that for Candier also, their sales were up by almost 112%, which is a light jewelry business. And in terms of stores, if we see, for jewelry, they opened around 33 stores. Even imagine, after having such a big base, Titan is opening much more stores than compared to Kalyan. Kalyan opened only around 70 stores. So there are a lot of things when you analyze business, when you look at it, when comes into picture, right? And whenever there are multiple businesses in the same sector, the market, overall market I'm talking about, right, looks at the competition and how well the competition is doing. And accordingly, it, re-rates or derates the
the company in the stock market. So this is for Titan. And if you look at their overall revenue growth, the overall was around 41%. As I told, they opened around 33 stores. Currently, the total number of stores are around 3,680 stores. And as I spoke about their uh, carrot lane, right? So the carrot lane also grew quite well, and especially in US, North America, and in GCC also, which is nothing but the Gulf countries, which includes UAE, Bahrain, Kuwait, and all those countries. So when we look, when we compare Titan and Kalyan, right? Because they are the biggest, how to say, listed in the players in the jewelry spaces. Titan did much better than Kalyan in terms of the overall growth, and that's why the market rewarded Titan when the result came out and punished Kalyan. So I think with this, hopefully, you will learn something new. And in terms of we look at Senko Gold, the overall revenue grew by around 60%. And if you look at their retail revenue, that grew by around 48%, and their same store sales growth also was quite good at close to around 38%. And in terms of if you look at the diamond jewelry growth also, right, it was around 40%. So if you look at all the three businesses that we have seen right now, right, that clearly shows that in the jewelry space, the diamond side of the studded businesses are doing much more better. And one of the reason is why I could make it out is because of the high how to say high price of gold. So people prefer little light jewelries or with diamond studded where the overall price is. When we could see the same thing in regarding Senko Gold. This is my opinion, right? Senko Gold is like stop and go kind of a businesses I've noticed because they are not consistent in their growth. Sometimes they grow, sometimes they degrow. Yeah, I mean, sometimes the growth is low. So even though the numbers are so good in Q1, personally, I don't trust what will happen in the next 3 quarters unless and until it how to say it consistently grows at a good rate and at a high number. Market will not reward it that much. I'm not saying that it's not going to grow. It will grow, and the shareholders might make some money, but not at that rate. And if you look at the number of stores that they have opened around only 8 stores. I mean, it's such a small how to say what do you call jewelry business, and they currently have very less stores. And obviously, if they want to grow much more higher, even get at the level of Kalyan and all those stuff, they need to open stores at much higher rate. Otherwise, they are never going to reach the rate of Kalyan or Titan at all. So that's my point on Senko Gold. And if you look at PN their revenue also grew by quite a good number at around 41%. Same store sales growth is around 46%. And if you look at their stud ratio, right, that again rose to 10.9%. So this again confirms the, how to say, the point that people are more buying studded jewelries compared to the how to say compared to the gold. I mean, the gold is still being sold, but at the same time the share of stud ratios are increasing, and obviously it is good for the companies also and for the customers, because for the customers obviously they get at something which is less expensive, but at the same time for companies because that has higher margin rate. And in terms of one thing which I did not like about PN at all, and this is like they did not open any new stores in Q1 of FY27, and they're saying that they will open 25 stores in the next 3 quarters. And I was be very honest, I was very surprised, and I was like, what is the company doing, right? They have less than 100 stores at this point of time, and if they want to grow, why they are opening only the next quarter? Why they have not opened in this quarter? So I mean, personally, I think that they were not confident that the sales will be that much, and the remaining 3 quarters are much more better. So that's why they want to open in the next 3 quarters. I don't know, but I personally did not like this. Yes, they did grow well, but over here also it is like miss and go, because even though they're at such a how to say what do you call such a small base, but they are, if you look at their ambition and their growth compared to the overall jewelry business, that's quite less, and that is the reason why in the market it is still at such a low peak compared to Kalyan, compared to Titan, right? No matter, even if people are planning to buy it, if it does not grow at that high rate, right, nothing will change. And if you look at the overall growth for all the companies, which as of now the results have come out, Titan grew by around 39%, Kalyan around 38%, Senco 60, PN Gadgil 41, and PC Jewellers 20%. So why have put a car speed analogy, right? Because in stock market, right, the higher the car speed, the more the market rewards it, right?
But at the same time, just having the business with the highest car speed does not mean it will always get rewarded, because there are a lot of other things that needs to look into it, especially in terms of whether the business is consistently doing that or not. Because if you look at Senco, as I told you, right, it's always miss and go. Sometimes they do well, sometimes the sales growth goes down. Titan has been consistent. Kalyan has also been consistent and was growing at a much faster rate compared to um, Titan. But in this quarter, they did not. Obviously, it is only 1% difference, but market does not care, because market is like, okay, Titan is so much huge, but still growing at a faster rate compared to Kalyan. PN is again, I mean, I don't want to say much. Let's see how well they do. In terms of PC Jewelers, their turnaround story is almost done, because they are, if you look at among all the jewelers, right, their growth was only around 21%. So I don't think they'll be able to do much. So that was all from the business update from the jewelry side business. I hope you guys like the analysis and understood what is happening. And if you like this video, please do hit like and subscribe to my चैनल ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू सो ओके सो नाउ अभी हम लोग अपना वीडियो हिंदी में चालू करेंगे तो आज के वीडियो में मैं आपको चार ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बिजनेस अपडेट दूंगा जहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स टाइटन सेंको गोल्ड और पीएन गडगिल के बारे में तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स का जो रिजल्ट आया था उसमें उनके जो सेल्स ग्रो हुए ऑलमोस्ट 38% 38% ग्रो हुआ और उनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रो था वो भी अराउंड 28% ग्रो हुआ और इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 35% का ग्रोथ आया और उनका जो लाइट ज्वेलरी बिजनेस है जहाँ पे मेनली वो ऑनलाइन और स्टोर में भी सेल करते हैं जो कैंडियर के स्टोर्स है वहाँ पे ऑलमोस्ट 112% का ग्रो हुआ और इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स अगर देखेंगे तो 12 कल्याण के शोरूम्स ओपन किए और 5 कैंडियर के शोरूम्स इन्होंने ओपन किए तो ओवरऑल अगर हम लोग नंबर देखेंगे तो नंबर काफी अच्छा है भाई आई मीन कितनी सारी कंपनियां जो 38% या 40% के आसपास ग्रो करती है ज्यादा नहीं यहाँ पर उन्होंने 38% के हिसाब से ग्रो किया बट अगर आप मार्केट में देखोगे जिस दिन का रिजल्ट आया था राइट उस दिन मार्केट ने काफी नेगेटिव तरीके से रिएक्ट किया इतने अच्छे ग्रोथ देने के बाद भी उसका रीजन क्या है उसका रीजन है टाइटन अगर आप टाइटन का ग्रोथ देखोगे जो उसका कंपटीशन है उसने ऑलमोस्ट 39% से अपना सेल्स ग्रो किया इमेजिन टाइटन इतना बड़ा होने के बावजूद इतना हाई बेस होने के बावजूद वो कल्याण से ज्यादा हाउ टू से ज्यादा रेट से ग्रो किया और मार्केट ने अगर आप देखोगे तो कल्याण को पनिश किया जिस दिन रिजल्ट आया और टाइटन को रिवॉर्ड किया और ये मार्केट का सिंपल रूल है जब भी कोई सेक्टर होता है अगर हम उसमें कोई भी कंपनी को फॉलो करें अगर दो कंपटीशन है जो कंपटीशन अच्छा करता है मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है जो कंपटीशन अगर इतना अच्छा नहीं करता मार्केट उसको पनिश करता है ठीक है तो यहाँ पर वही चीज हुई अगर हम टाइटन के बारे में देखेंगे तो उनका ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ वो ऑलमोस्ट 39% के आसपास है तनिष्क और कैरेट लेन देखोगे तो तनिष्क जो मेन गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पे अराउंड 39% का ग्रोथ हुआ है और कैरेट लेन में अराउंड 42% का ग्रोथ हुआ अगर आप कैरेट लेन के स्टोर्स शोरूम विजिट किए रहेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जो ज्वेलरी जो बनती है वो ऑब्वियसली डायमंड और स्टड के साथ होती है और वो हाउ टू से मोर लेस एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू गोल्ड तो वहां पर जो लोग के पास ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना वहां पे जाके खरीदते हैं तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो कैंडियर का जो ग्रोथ हुआ यहाँ पे कैरामल का जो ग्रोथ हुआ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो मेजोरिटी जो कस्टमर्स आ रहे हैं ना बिकॉज जो गोल्ड प्राइस इतने बढ़ चुके हैं वो यहाँ पे स्टडेड स्टडेड ज्वेलरीज और लाइट ज्वेलरी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम उनका ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 41% ग्रो हुआ है क्योंकि उनके पास थोड़े और दूसरे बिजनेसेस भी हैं वॉचेज आई केयर एंड इमर्जिंग बिजनेस बट यहाँ पर उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं उनका मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन आता है ज्वेलरी बिजनेस से अगर टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने 33 स्टोर्स ओपन किए हैं और एक और अपडेट जो है कि उनका जो ये जो तीनों जो ब्रांड है ना उनके जो हाउ टू से इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अच्छा ग्रोथ आया नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज जीसीसी कंट्री में जीसीसी कंट्रीज वो सारे गल्फ कंट्रीज होते हैं जो एक ग्रुप है जहाँ पे यूएई कटार बहरीन कुवैत ये सब मिलके आते हैं तो ये टाइटन के बारे में अपडेट अगर हम नेक्स्ट अपडेट देखेंगे तो सेंको गोल्ड है यहाँ पे इनका जो अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छा हुआ है ऑलमोस्ट 60% के आसपास से हुआ है अगर उनका सेम सोर्स से वो भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है 38% और जो डायमंड ज्वेलरी जो स्टडेड बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 40% ग्रो हुआ है तो अगेन तो अगर हम ये तीनों जो अपडेट देखेंगे कल्याण का लेके टाइटन का लेके सेंको गोल्ड का लेके राइट तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो स्टडेड साइड की ज्वेलरी है और अलॉन्ग विद गोल्ड वो उनकी ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू द ओवरऑल नंबर के हिसाब से तो यहाँ पर लोग प्रिफर कर रहे हैं कि भाई मुझे लाइट ज्वेलरी चाहिए स्टडेड ज्वेलरी चाहिए जो थोड़े
लेस एक्सपेंसिव है मेरे लिए। यहाँ पर इवन दो जो नंबर सेल्को गोल्ड का इतना अच्छा है, मार्केट ने ऑब्वियसली इसको रिवॉर्ड किया बिकॉज नंबर अच्छा है, बट ये बिजनेस को मैं ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने भी पहले इन्वेस्ट किया था, मैंने अभी कंप्लीटली एग्जिट हो चुका हूँ यहाँ से। इसका प्रॉब्लम क्या है ना, इसका कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। अगर आप इसकी ग्रोथ देखोगे तो कभी अच्छा ग्रोथ करता है, फिर ग्रोथ कम हो जाता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर वापस कम होता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप टाइटन देखोगे, अगर आप कल्याण देखोगे, राइट, उनका ग्रोथ कंसिस्टेंट है, इसलिए मार्केट बाय डिफॉल्ट कल्याण और टाइटन को ओवर द इयर्स ज्यादा रिवॉर्ड किया है, राइट। तो यहाँ पर जब तक सेनको ये कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करेगा और मेंटेन नहीं करेगा ये ग्रोथ, इसका कुछ हमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वही इसका चलता रहेगा जब तक ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं देगा। तो ये सेंको गोल्ड के बारे में हो गया। और जो चौथी जो ज्वेलरी कंपनी इस टाइम में डिस्कस करूंगा, जिसका अपडेट आया था, वो है पीएन गडगिल। ये अपने महाराष्ट्र के स्टेट से है। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखो तो इनका रेवेन्यू भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, ऑलमोस्ट 41% के हिसाब से। अगर आप सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट 46% के आसपास से ग्रो हुआ है। और उनका जो स्टड रेशियो है वो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 11% के आसपास हो गया। तो अगेन स्टड रेशियो, जैसे मैंने आपको पहले 3 धंधे में बताया था कि उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज, यहाँ पर भी उनका इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो ट्रेंड है, जो अमीन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड ज्वेलरी प्रीफर करते हैं और मेन गोल्ड ज्वेलरी प्रीफर करते हैं, पर जिस तरह से इनके जो प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो लोग ये ट्रेंड क्लियरली दिखा रहे हैं कि लोग थोड़े सारे काफी सारे लोग हैं ना जो स्टड रेशियो और थोड़े लाइट ज्वेलरी पे कॉन्सेंट्रेट करना चालू है। और यहाँ पर जो मुझे एक अपडेट बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो इनका इस क्वार्टर में एक भी नया स्टोर ओपन नहीं किया। हाँ, उन्होंने बोला है कि भाई अगले 3 क्वार्टर में 25 स्टोर ओपन करेंगे, और इनके ओवरऑल आई थिंक स्टोर नंबर एज ऑफ नाउ अराउंड लेस देन 100 है। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई अगर तुमको आगे बढ़ना है, तुमको ग्रो करना है, तो तुमने एक भी स्टोर ओपन क्यों नहीं किया, राइट? क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अगर आप स्टोर ओपन करोगे तो आपके सेल्स होंगे नहीं, और आप नेक्स्ट 3 क्वार्टर में ही ओपन करोगे जहां पर चांसेस ऑफ ज्यादा सेल्स होने के हैं? क्योंकि अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे कल्याण को कंपटीशन देना है, कल्याण से आगे बढ़ना है, राइट, तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते रहोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर इसलिए अगर आप देखोगे, टाइटन का सबसे ज्यादा हाई पी है बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रोथ है और अभी भी ग्रो कर रहा है। कल्याण उससे थोड़ा नीचे है। पीएन गडगिल और सर्किल सबसे नीचे है। जब तक पीएन गडगिल और सर्किल ज्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करेंगे और हाई पेस से ग्रो नहीं करेंगे, ये कभी भी कल्याण या टाइटन के लेवल पे नहीं पहुंचने वाले हैं। तो ये था सारा अपडेट इस वीडियो के लिए। जो लास्ट चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो कार स्पीड। कार स्पीड का मतलब होता क्या है, राइट? देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी सेक्टर हो, वहां पर जिस सेक्टर के अंदर जो गाड़ी सबसे ज्यादा तेज भाग रही है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, मार्केट भी उसके पीछे भागता है, ठीक है? डजेंट रियली मैटर कि उसका वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना है, बिकॉज अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो समटाइम वैल्यूएशन सेंस समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। वो होता क्यों है? क्योंकि बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। अगर आप टाइटन का देखोगे कंपेयर टू कल्याण, टाइटन का पी ऑलमोस्ट 90 के हिसाब से आता है, बट स्टिल जब इसका रिजल्ट आया, मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। जबकि जब कल्याण का रिजल्ट आया, लो पी होने के बावजूद भी उसने 38% से ग्रो किया, मार्केट ने स्टिल उसको पनिश किया क्योंकि मार्केट को वो रिजल्ट पसंद नहीं आया। इवन दो सनको और पीएन गडगिल का जो स्पीड है टाइटन और कल्याण से ज्यादा है, यहाँ पर इन पे मार्केट का ट्रस्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, सेनको इनका सेल्स बढ़ता है, फिर कभी कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कभी कम होता है। पीएन गडगिल का सेल्स ओके बढ़ रहा है, बट इतने छोटे बेस में होने के हिसाब से इनको ज्यादा स्टोर ओपन करने चाहिए, ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट उनको इतना अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जब तक सेनको और पीएन गडगिल ये चीजें बदलेंगे नहीं, आई डोंट थिंक मार्केट उनको इतना रिवॉर्ड करेगा। और पीसी ज्वेलर्स का मैं बोलूँ तो आई मीन आउट ऑफ क्वेश्चन है अभी, क्योंकि वो 21% से ग्रो किया है कंपेयर टू एनी अदर दूसरे बिजनेस के हिसाब से। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो टर्न अराउंड स्टोरी थी अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अनलेस एंड अनटिल ये फ्यूचर में और ज्यादा कुछ ग्रो करेगा। तो ये सारे थे अपडेट सारे ज्वेलरी बिजनेस के बारे में। अगर आपको अपडेट्स पसंद आया और लाइक आया और आपको एनालिसिस भी अच्छे लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।